The side hustle is something that is driven by inside, coupled by an inside. Right? ठीक है, बिजनेस करना है तो भाई बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए. आप तो भाई क्या चलाते हैं, अब आप क्या करेंगे? तो मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं? He said Bolton market से. They don't have time to digitize. All of these things he's selling online without any investment. In Germany, you can send up to 70,000 kids from Pakistan every year. आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा AI का काम कहाँ हो रहा है? Data science solutions and training avatars. They were working on training avatars for doctors. Website of the world. Okay. That hires talent all over the world. Okay. वहाँ पे jobs ज़्यादा है, लोग कम है. Yes, I see that coming. So 10 side hustles that can help you generate income streams. आज हम बात करेंगे उसके बारे में. चाहे आप स्टूडेंट हैं, यंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी भी काम में हैं, बिजनेस में हैं या जॉब पे हैं, अगर आपको इनकम स्ट्रीम्स के बारे में जानना है जो कि आप एज अ साइड हसल कर सकते हैं. मेरे साथ मौजूद हैं आज गुलाम जिलानी कोठारी साहब, जिनसे हम इन साइड हसल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे. ही इज़ एक्स ग्रुप एम एंड एन अमेजिंग डिजिटल मार्केटियर जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर काम किया है. एंड बिफोर वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन आई वुड लाइक यू टू सब्सक्राइब बिकॉज दैट रियली हेल्प्स अस ग्रो. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड वील मूव टुवर्ड्स द कॉन्वर्सेशन विद गुलाम साहब नाउ. अस्सलामुअलैकुम गुलाम जिलानी कोठारी साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं, हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग ग्रेट. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम. You're welcome and I'm looking forward to today's show. आई एम सुपर एक्साइटेड. ऑफ कैमरा आपने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया. आई वाज लाइक यार ये तो रिकॉर्ड होना चाहिए था. बस वो अभी करते हैं, आप कोई टेंशन ले रही हैं. Since a lot of people approach you for their help and I actually posted अभी हफ्ता दो हफ्ते पहले on LinkedIn that what are the topics that you'd like to see the podcast के ऐसे कौन से मैं गेस्ट बुलाऊँ, ऐसे कौन से टॉपिक्स हों जिन पे आप इंटरेस्टेड होंगे जिससे आपकी एक्चुअली हेल्प हो सके. और उस पोस्ट पे a lot of people were commenting about their own challenges कि इस पे बात करें, इस पे बात करें, इस पे बात करें. बट साइड हसल was something जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, नॉट जस्ट इन कॉमेंट्स एंड इनबॉक्सेस एज वेल बिकॉज a lot of people are just young professionals और स्टूडेंट्स जो कि अपने पढ़ाई के साथ या अपने काम के साथ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम देख रहे हैं, इनकम स्ट्रीम्स ढूंढ रहे हैं, थर्ड सोर्स ऑफ इनकम जस्ट बिकॉज मतलब इन्फ्लेशन है, चैलेंजेस हैं. तो हो सकता है वन इनकम स्ट्रीम इज नॉट इनफ. For side hustles, I always say that it's not like you need to find out your side hustle your way and by your own passion. क्योंकि anything that you do additional has to be driven from inside. It cannot be कि यार because कोई और कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा. सही है. For example, अगर वो कोई बंदा कोई और कर रहा है तो उसके dynamics बहुत different होंगे versus जो आप कर रहे हैं. सही है. I'll give you a very small example. There was this guy. He used to work for Precap. He used to run on motorcycle throughout the day and पूरा दिन जो है ना वो मट्टी and all of that, right? And then one day he reached out to me and he was like, यार मुझे आपसे टाइम चाहिए. I was like, यार for sure, why not? बात करते हैं, क्योंकि he used to live in my area. मैं कहा हाँ ठीक है बात करते हैं. And then he was like, यार बॉस I am sick and tired of this job. मुझसे अब नहीं हो रहा, मैं अब नहीं कर सकता. मैं कहा अच्छा ठीक है, बताओ करना क्या है? I was like, यार करने को तो बहुत कुछ है लेकिन मुझे आपसे कुछ आइडियाज़ चाहिए. was like, okay, किस तरह के आइडिया चाहिए? यार मुझे ना कोई बिजनेस करना है. ओके नाउ उस when he said क्या कोई बिजनेस करना है तो भाई बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए. आप तो भाई क्या चलाते हैं, अब आप क्या करेंगे? he said हाँ यानी कि लेकिन करना तो है बिजनेस. I cannot be like one of those people जो कि पूरा दिन बाइक पे घूमते हैं. Then I asked him, यार मुझे कुछ ऐसा बताओ कि what interests you the most, like तुम्हें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं? he said Bolton market से. Like what? Bolton market से. Bolton market से. Like people कहते हैं कि यार वो I need a scissor, I need a plus, I need a blower, I need XYZ. Like बहुत सारी चीजें हैं जो कि Bolton market में available होती हैं. सही है. Then I sat with him and I thought, क्या what is it that he can do over here? Then I told him that you need to reach out to 3 different people who do not have digital presence. He said, okay, perfect. Then he reached out to some people that used to run a hardware store, a full-fledged hardware store in Bolton Market. What he did was he went over there, he did the photography, and right now he runs one of the biggest hardware stores on OLX and Taras. Every time he gets an order, he reaches out to them. There's a guy who picks up the stuff, goes to Taras office, drops it, and ships it. Amazing. Those people are just focused on selling all of their stuff through their store, their storefront, which is in Bolton Market. They don't have time to digitize. So the side hustle
is something that is driven by insight, coupled by an insight. Right? He had an insight. Yeah. कि all of these businesses, हाँ. they are not digitally Presence savvy. They are नहीं है. not हाँ. digitally present. ठीक है. Right? Nobody knows their price as well. You can sell at a retail price while buying from an wholesaler of a product that has a demand. And he was only present in Karachi. These products have demand all over Pakistan. How many times do you think यार एक हार्डवेयर स्टोर पे जाके आप जो है वो अपने घर का हार्डवेयर का सामान खरीदेंगी? डोर लॉक्स हैं, नॉब्स हैं, ब्लोअर है, कोई भी चीज़ हो सकती है. ठीक है, 3-pin plug है. All of these things he's selling online without any investment. Right? So that is a side hustle. Interesting. I'll give you another story. I know a guy. He was an HR professional, Okay. right? And no, sorry, not a HR professional. He was a procurement professional. अच्छा. He was a great sourcer. He could source anything and everything that you want. Okay. यानी कि एक पेन आपको चाहिए जो कि चाइना में बनती है और उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान लिखा हो, आपको वो भी ला के दे देंगे. वो इतने बड़े सोर्सर थे. ठीक है. Okay. But with time he grew. यानी कि he started growing old. He started thinking कि यार अब जो है वो मेरी ढलान आने स्टार्ट हो गई. I've started declining, right? Started going into a decay phase now. तो अब जो है वो ये वाला सिनेरियो कि यार अब क्या करें. He understood two things. One, sourcing, finding the right product for everybody's requirement. That was his talent, first thing. The second thing that he had was connections. आपके फ़ोन में आज कितने कनेक्शन हैं? 4000 तो होंगे. 4000 नहीं है तो 400 तो होंगे. Right? That person had a lot of connections. He stated कि अच्छा यार ठीक है, I am a great sourcer. I can find anything and everything for you. Then he had social connections as well. What is he today now? He's a talent sourcer. He provides talent to a lot of people. And you know what kind of talent he manages? He manages influencers. Influencers. Yes. Okay. He manages YouTubers. Okay. Yes. He is one of those people जिनको हम कॉल करते थे कि यार भाईजान ये फला इन्फ्लुएंसर की डेट चाहिए. Wow. He talks to telephone companies, mobile phone companies. He talks to automobile companies. That guy talks to networks. So he is focusing on networks. थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं और आइडियाज हम जानना चाहेंगे ताकि लोगों को पता तो चले ना कि अच्छा ओके आई कैन डू दिस, आई एम गुड एट दिस, मे बी मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ. तो 10 साइड हसल आइडियाज यू गॉट टू गिव अस. Okay, 10 side hustle ideas. Let's start with कुछ ऐसी चीज़ों से मैं स्टार्ट करता हूँ and then as we move on we'll explore more, right? So इस टाइम पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किस तरह के लोग पाए जाते हैं आपको? अगर मैं सिर्फ डिजिटल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, सही है, since I come in from a digital marketing side and all of that. So what are the top kind of talent that you can find in Pakistan? You find content writers, you find designers, you find video animators, you find graphic designers, and you find producers. ठीक है, 5 top talent जिसको आप कह सकते हैं कि यार this is in abundance and they're already working somewhere in some capacity. हाँ. In either in a software house or in some company or in some kind of a role, right? हाँ. Now, अगर आप आज पाकिस्तान की digital landscape को उठा के देखें, so what is the kind of the content that you can see as the top content outside of social media? What kind of content can you see over there? Do you see any informative websites locally? No. You don't find them, right? Similarly, do you find any tech websites made locally apart from What Mobile? No. Right? Do you find any local produced content for kids to watch? No. एक ये गुलाम रसूल. उसके अलावा पाकिस्तानी कंटेंट जो कि आप बच्चों को दिखा सकते हैं. No. You don't find that, right? But इसका टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है. चैलेंज क्या है? What is the challenge? These 5 forces don't combine with each other. एक राइटर जो कि अच्छा कंटेंट राइटर हो, अगर वो एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखे, एक डिजाइनर जो कि अच्छे कैरेक्टर्स डिजाइन करे, एक एनिमेटर जो कि उसको स्टोरी बोर्ड में डाले, एक ग्राफिक डिजाइनर जो कि उसके स्टिकर्स बनाए, जो कि उसके सारे जो रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर अ यूट्यूब और फॉर अ वेबसाइट वो बनाए, और एक वो बंदा
जो कि प्रोड्यूसर है, जो कि म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकता है, who can do voice overs, who can do all of this. If these five are combined into one place, they can make a one production company right away with a $0 investment. So I'll write those down. First of all, you said production, but आपने production में 5 चीजें include कर ली. Yes. But again, let's break it down also to simplify. ये वो चीज थी production जिसमें 5 skills चाहिए थी. 5 लोग चाहिए आपको, skills नहीं चाहिए. वो 5 लोग आपके दोस्त भी हो सकते हैं. Okay. वो 5 लोग आपके साथ के co-workers हो सकते हैं. वो 5 लोग आपके and you talk about content production, right? Yes, simple content production. YouTube का चैनल बनाए, कोई वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, फ्री है. Upload as much as you want. Start creating content. I, as a father, find this as a challenge. What is that kind of the content that I want my son to be exposed? While living in Pakistan, that delivers anything that can be a replication, or that can be a reflection of what Pakistan values are. I find that a challenge today. Right? मैं अपने बच्चों को जो है वो रामा गीता दिखा रहा हूँ इस टाइम पे, because there's no content, right? सही है. He's picking up the culture of international markets. He's picking up culture from other countries. ये बहुत गलत हो रहा है. उसका बेस्ट फ्रेंड जो है इस टाइम पे वो है, विलाद है. ठीक है. I went for a trip right अभी कुछ दिन पहले, and my son was like, hey, Dad, get me a Superman from an XYZ store. And I asked him, how do you know that store exists where I'm going? He said, Vilad told me. And then when I actually searched upon it, Vilad and Nikki are actually those characters that does all of those toys reviews and tells, okay, I went to the shop, I did the shopping and all of that. And my son is almost 5 years old, right? Twice review, wow. Right? He knows what kind of costume I need to wear on my fancy dress show. We never knew about it. हमें तो अम्मी अब्बू जो है वो पत्ते वत्ते लगा के कुछ भेज देते थे स्कूल में, और हम जो है वो ऐसी बत्ती थे आते थे, right? सही है. So not about that, but it's also about how well he's picking up onto the international culture that's out there, that's prevailing out there. पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, and it's open ground. Now, also just adding one thing, YouTube channel पे आपने बात की in content production पे, so I was just searching more on YouTube क्योंकि मैं उस पे काम कर रही हूँ. तो YouTube पे content में ideas में there was this one thing and I was very surprised seeing this कि a lot of people are just doing this. कोटेशंस उठाते हैं, रील्स या शॉर्ट्स बनाए. शॉर्ट्स आर क्योंकि वो शॉर्ट्स पे व्यूज ज़्यादा आ जाते हैं. लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट इतना चलता नहीं शॉर्ट फॉर्मेट. तो शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट के लिए 30-40 सेकंड की रील्स इंस्टाग्राम के लिए यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाए. उसमें आपने कोटेशन, बिकॉज एक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, वाइट बैकग्राउंड है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोटेशन रिलेटेबल हो, पीछे रेलिवेंट ट्रेंडिंग म्यूजिक लगा दिया एंड देन अपलोडेड एज अ शॉर्ट. तो शॉर्ट्स में अगर कोई स्क्रॉल करते करते उनको कुछ टेक्स्ट मिल रहा है, कुछ रेलिवेंट कोटेशन मिल रही है जिससे लोग रिलेट कर सकें, और ट्रेंडिंग म्यूजिक है, it pumps like this. I mean, उस पे views हैं टक and they're monetizing it. Now hear me out. This is talent that I was talking about just a few moments ago, right? This is the talent, but that talent is not directional into something that is going to be fruitful. Long term. वो 30 सेकंड की वीडियो देख के आपको क्या हासिल हुआ? Right. We'll move towards the second side hustle. Production पे हमने बात की, content production पे. Second, you were talking about affiliate program. Affiliate program and affiliate marketing. Affiliate program. So there are a lot of affiliate programs out there. ठीक है. It's just that we don't explore. Okay. Affiliate can be, आपके पास एक वेबसाइट है, आप उसके ऊपर एक affiliate program subscribe कराएं. All the traffic that you send out there, and if anybody subscribe, anybody purchases, you're going to get paid. Affiliate is an industry. Affiliate is a huge industry out there. आपको पता है जितने भी SaaS based products हैं, सॉफ्टवेयर सर्विस के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे affiliate की इंडस्ट्री पे काम करते हैं. If you're a good content writer, and if you start writing content about cameras, you start writing content about phones, you start writing content about VPNs, you start writing content about anything and everything that people are looking to get traffic onto their website, start writing blogs. The moment a user purchases a product that is driven from your blog, you make money. Back to the side hustles. आपने एग्जाम्पल में ही इतनी सारी कवर कर ली कि मुझे लगता है वो 10 से ज़्यादा वैसे ही हो जाने वाली हैं. बट ओके, सो आपने एफिलिएट प्रोग्राम्स की भी बात की, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. बट थर्ड वन,
Third side hustle. Now this is going to be a very interesting one. ये बताएं कि आपके पास कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं, सही है, लेकिन आपके पास उनके लिए कोई बिजनेस नहीं है. ठीक है. कैन यू यूटिलाइज देम एनीवेयर? आपका जवाब है नो, राइट? क्योंकि मेरा अपना कोई बिजनेस नहीं है. Yes, exactly. I tell you, you go onto my LinkedIn and you see a lot of people that says I post about a lot of people. कि यार this person is this person is that, this person is this person is that. Start branding them into one place. एक बंदा है आपका जो कि अच्छी फोटोग्राफी करना जानता है, या एक बंदा है जो कि कोई भी एक अच्छा स्किल सेट रखता है. सही है. मैचिंग विद अनदर पर्सन. ये दो लोगों को मिलाया आपने और एक प्रोडक्ट बना लिया. उस प्रोडक्ट को कोई भी नाम दे दिया. दो लोग मिलकर एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं. ये तो सुना ही होगा आपने, वन इज ऑलवेज बेटर देन टू. ओह सॉरी, टू इज ऑलवेज बेटर देन वन, राइट? एक और एक 11 वाली जो एग्जांपल होती है. बट पीपल आल्सो डू दिस, क्या रेफर कर देते हैं, और मतलब वी आल्सो डू दिस कि अच्छा ओके दिस पर्सन गुड विद फोटोग्राफी स्किल्स या वीडियोग्राफी स्किल्स एंड दिस पर्सन नीड्स सर्टेन फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर, वी कैन कनेक्ट देम. हां, यू कनेक्ट करते हैं. आई गिव यू दिस एग्जांपल. एक बंदा जिसके पास एसईओ का टैलेंट है, एक बंदा जो कि राइटर है, सही है, इन दोनों को किस चीज़ की जरूरत होगी? एक वेबसाइट डेवलपर की, राइट? यू स्टार्ट मेकिंग कोऑप्स. से यार आपको डेवलपमेंट आती है, आपको एसईओ आता है, मैं कंटेंट लिख सकता हूँ, ये लिख सकती हूँ. लेट्स स्टार्ट collaborations, partnerships. In fact, so I was watching this podcast, मैंने collaborations भी लिखा है. I was watching this podcast, Diary of a CEO. इसमें there was this lady, Cody, and she produces the content on YouTube and she tells about the side hustles. Mostly उसका यही होता है. और उसका मैंने कभी देखा नहीं था, बट डायरी ऑफ अ सीईओ में जब मैंने उसका पॉडकास्ट देखा तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और वो उसकी अपनी स्टोरी पे था, लेकिन उसकी स्टोरी के साथ साथ जिस तरह उसने बात करनी शुरू की, एंड अभी मैं बात कर रही हूँ कि हमने दो लोगों को कनेक्ट कर दिया, एंड शी सेड आई स्टार्ट कमर्शलाइजिंग दैट. आई मीन सिंपली ओके, सो मैं यहाँ पे कोई कम्युनिटी वैसे मतलब मैं उसको खुद के लिए यूटिलाइज नहीं कर रही, मैं कोई वेबसाइट नहीं बना रही, पर अगर मुझे पता है कि ये बंदा अच्छा काम करता है, जस्ट चार्ज देम, कमर्शलाइज किया, एंड देन दैट्स इट. और वो कमीशन ली एंड दैट्स इट. Connecting people. Yeah, connecting people. So we talked about partnerships, that is collaborations, and then we talked about connecting people. Yeah, these are the 4 things, and the 5th one is digitizing businesses. Okay. We've already talked about this, how you can start off with digitizing businesses in your surroundings and all that. But the next one that I'm going to come to, that is much bigger than just digitizing any of the shops in your surrounding or anything, is but it's related to being educated again, which is Amazon. A lot of people in Pakistan don't know how to sell stuff on Amazon. ठीक है. आपके पूरे पाकिस्तान में if you talk about Karachi, there are a lot of exporters that are sitting over here that are selling unbranded of their products internationally. Second, आपके पास पैसे नहीं हैं. ठीक है. आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. ठीक है. There's a lot of demand of virtual assistants on Amazon. Right now, आपके पास sources हैं. You know people who are into export. सही है. Start setting up their private label businesses. उनके ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाएं, उनका प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट कराना स्टार्ट करें. मैनेज देयर स्टोर्स. ठीक है. अब उसके अंदर वंस अगेन यू नीड टू हैव पीपल हु know how to do photography of that sort. You need to know how people can help you with product listing, with SEO, with content writing, research. ठीक है. So you need to have all of that. And once again, this is not one person's job. But if you're a digital marketer and you know a lot of these things, जैसे content and photography है, हाँ, so VA का काम तो एक digital marketer कर सकता है. Yes, वो कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं. But once again, आपको जो content लिखवाना है, आपको SEO लिखवाना है, आपको product listing लिखवानी है, ये 3 चीज़ों के लिए आपके पास एक दोस्त है जो आपको फ्री में मिला हुआ है. आपको मालूम है उसका नाम? नहीं. ChatGPT. Yes. ChatGPT is your best friend. Yes. It's just that you need to know how to ask a question from ChatGPT. Yes. And that is also a skill. That is also a skill. That is a big skill. Yeah. That is a big skill. You need to know what kind of prompts you need to give to ChatGPT in order for ChatGPT to give you the answer in the format that you're looking for. So we've talked about Amazon. Amazon के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त सिनेरियो है. आपके पास VA भी नहीं है और आपके पास
वो भी नहीं है, आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट्स की भी कोई जॉब नहीं है, एंड यू डू नॉट फाइंड एनीबडी हु इज डूइंग हु इज रेडी टू मेक द ब्रांड इनटू प्राइवेट लेबल एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन आपके पास छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, वेयर कैन यू गो इनटू होलसेल. डव पूरी दुनिया में रिक्वायर्ड है. कुछ इन्वेंट्री खरीदें, अपना स्टोर बनाए अमेजोन पे एंड स्टार्ट सेलिंग इनटू होलसेल. जीन्स, garments, anything. It's just that you need to know what kind of tools you need to buy in order to be enabled and being enabled on Amazon. और उससे मुझे याद आया enabled से कि there is a company that is called Enablers that trains you on Amazon. Go to them. There's a company that's called Extreme Commerce run by Sunny Ali. Right? Go to him. These are the people that are actually the kind of the people that Pakistan market needs, that have that thought leadership, that have that vision of changing the structure of our economy, using the talent and guiding them into the right directions. Yes. I did Learn my from first their interview experience. with Extreme Commerce. This guy who works at Extreme Commerce. अब उसने पहले तो वहाँ पे ट्रेनिंग ली थी हमजा ने. He studied there. Yeah, I saw that. Did you see that? Yes, I saw that. I saw that. That was my first video. And Oh, a lot achha, of I didn't people know that. don't- It's the first one. A lot of people don't know that was my first video. So that was an experiment basically. That तो मैंने कहा कि यार Extreme Commerce is somewhere जहाँ मैं जा चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा और मुझे थोड़ी बहुत मालूमात भी है उस बारे में क्योंकि ट्रैक्स के साथ साथ रहते हुए मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया था. तो मैंने कहा हमजा से बात करते हैं और हमजा से एक्सपीरियंस उसका शेयर करते हैं. तो उसने एज अ स्टूडेंट वहाँ पे ज्वाइन किया था. एंड वाज 19 years old. He must be 20 right now. तो उसने इस पे काम किया अमेज़ॉन पे, प्राइवेट लेबलिंग पे, वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे उसने स्टार्ट किया था सबसे पहले. एंड नाउ ही इज़ ट्रेनिंग पीपल इन एक्सट्रीम कॉमर्स. तो एज अ ट्रेनर भी वहाँ पे काम कर रहा है और अपना तो उसके PL है ही. तो आई मीन at 19 years of age, Yes, so that's what I'm saying. earning fair enough amount. Exactly. So Amazon is one of those ways how you can make a difference. Yeah. Amazon does not take more than 3 hours or 4 hours of your day. But if you start it as a full-time job, it might eat up your entire day and you might be in a space or in a zone where you are making much more money than what you're earning out of your regular income. So that hustle can turn into your own business. And I tell you what, a lot of people globally, they're now focusing on solo entrepreneurship. What is solo entrepreneurship? Solo entrepreneurship is that I'll run the show my way. I don't need anybody. आपको फाइनेंस मैनेज करना है, आपके पास गूगल शीट्स हैं. आपको कंटेंट मैनेज करना है, यू हैव चैट GPT. आपको फोटोग्राफी करानी है, यू हैव जनरेटिव AI. Everything is out there. Right? And you can just start your own business. Yes. आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा AI का काम कहाँ हो रहा है? US? No. Try again. China? No. Try again. UK? No. यार 2 ट्राई और दे रुके. मे बी जापान? No. जर्मनी? Yes. Germany is the market. Okay. जहाँ पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा heavily investment हो रही है into AI. They're working on, I tell you something that I worked with a company and we were basically working on data science solutions and training avatars. They were working on training avatars for doctors, hospitals. A doctor that can look after that can cater a patient for like, you can say in his 3 hours, he can look after like 30 patients maximum. क्योंकि उनका एक टाइम लिमिट होता है, there's a quota. And now with that avatar, they're focusing on telepathy. You don't need to come to the clinic and just be online. The doctor will be sitting and the avatar will be talking to you. And उसके लिए पूरी की पूरी एक machine learning की एक journey है, right? From 30 patients, they're focused on 3,000 patients serving through avatar. Wow. That is the scale that Germany is working on. Wow, interesting. Right. And Germany offers? In Germany, you can send up to 70,000 kids from Pakistan every year. This is the quota? Yes. Okay. Student visa pe. Wow. 70,000 students. Now talk about the economy of Pakistan. 70,000 students. इस बाकियों को deduct कर दें. Even if 10,000 students start sending $1,000 per month back to their home country. 1,000. Even after a year?
even after a year. Yeah. 1,000 multiplied by 10,000 multiplied by 12. आपने ट्यूरिंग का नाम सुना है? Tuning. Turing. ने मैंने नहीं सुना. Okay, so Turing is the biggest remote-based website of the world Okay. that hires talent all over the world. Okay. वहाँ पे जॉब ज़्यादा है, लोग कम है. Yes, I see that coming. Every time I tell that to people, they were like, "Really? ऐसा कैसे हो सकता है?" I'll search this website then. Turing. Now what happens is वहाँ पे जॉब्स वो नहीं है जो आप रोजमर्रा के तौर पे कर सकते हैं. HR की जॉब्स नहीं है, मार्केटिंग की जॉब्स नहीं है, बट डेटा साइंस की जॉब्स हैं. Okay. Yes. Now somebody who's into mathematics, somebody who's into Excel, somebody who likes to do data crunching, वो उसके लिए तो बड़ा आसान है काम करना. बट इस टाइम पे डेटा साइंस के लोग नहीं हैं. The challenge is if you don't study today of data science, you will not be able to qualify for that job. So, They take 5 exams before you can even make an account or you can even apply. Okay. People don't want to give those exams and then they're unable to apply to those jobs, which is why I said there are more jobs than the people applying over there. Right? And all the jobs are of data science. Most of the jobs are of data science. Okay. Now, what is the scenario behind data science? Why a lot of demand on data science? Because data science and machine learning is the base of AI. You teach AI and algorithms today in order to get an output tomorrow, right? And a lot of companies globally are actually investing in AI. So coming to 7th, I talked about machine learning, right? But machine learning and all of that, but there is always a start point. Where do you start from? हाँ, आपको कैसे पता चलेगा कि आप you cut for machine learning? क्योंकि machine learning is not something कि यार मैं आज जो है ना उठ के चला गया और मैंने machine learning से start कर लिया. So the first point is that do you like using Excel? Are you an Excel expert? Yes or no? If yes, then start looking at the diplomas that are out there that are going to upskill you towards your big data learning. Okay. Out of my experience, IBA is the best place to be in. Okay. IBA जाएं, वहाँ पे आपको Excel के ऊपर big data का proper diploma कराते हैं. हाँ, I saw Right? that. Yeah. So the reason of giving all of these names is कि मेरा उनसे कोई association नहीं है. I don't work for these people. I saw but really good reviews yes, of that. Yeah. Yes, but the reason of giving all of this information is that you बता तो सकता हूँ कि अच्छा यार आप big data पे चले जाएं, लेकिन फिर वही आपकी ऑडियंस बोलेगी कि big data करने जाएंगे. You start go and start applying to Turing. वहाँ पे आपने 5 एग्जाम्स देने हैं, वहाँ 5 एग्जाम्स क्लियर करें and then you go forward. इस टाइम पे I know this guy who's trying to set up a house in Pakistan that is going to actually teach data science journey in Pakistan. Okay. Yeah, but that's still in progress. So I will let you know once it's there. You can always announce this for your people. So stay tuned for that. You gotta let me know. I'll do this one. Yeah. So data science journey is something that is already in place. Okay. Then you talked about additional income streams. So I am right now actually quite overboarded. And जो हमने बात की थी Germany के बारे में. हाँ. So for Germany, I would like to emphasize on that a bit. If you have 3 brothers, एक को भेजने. एक को भेजने Germany. 3 भाई हैं, 2 भाई हैं. Export talent. Yes, export talent. Talent export करें. And Goethe is the place to go. Okay. Yes, Goethe Karachi is a great place to learn Germany. A1, B1 बेसिक को आपको सिखा देते हैं और इतना सिखा देते हैं कि you are able to clear your German visa program and then you go there, study and serve this country. Right? Additional income streams. So you're motivating people to go to Germany for the studies. How can this For be a side studies. hustle? You're talking about a side hustle? No, I'm- You're just talking कि अच्छा वहाँ से सीख के and then you Yes. can make an income stream as Yes, well. Yeah, exactly. Okay. Exactly. और अगर आपको नहीं भी करना तो जर्मनी के अंदर इतनी सारी रिमोट जॉब्स हैं. इस कदर ज़्यादा रिमोट जॉब्स हैं कि वो करें, डेटा साइंस जर्नी को स्टार्ट करें, वो पढ़ने के बाद देन यू कैन मेक इट अ साइड हसल व्हाइल बीइंग इन पाकिस्तान एज वेल. बर्लिन की आप वो खोल के देखें, वेबसाइट्स खोल के देखें, टैलेंट वेबसाइट्स खोल के देखें, यू विल सी सो मेनी जॉब्स आउट देयर दैट आर एक्चुअली इनटू मशीन लर्निंग, avatar making, productions. Like huge. The Yes. opportunity is huge out there. It's just that we need to tweak our efforts into the right direction. So, coming back to your question, okay, where do you start from? You go to guru.com, you go to freelancer.com, you go to Fiverr, you go to
वो क्या है अपना Upwork. Go to all of these places and start looking as to what is the requirement. There's एक चीज समझे, मार्केट का फिनोमेना क्या होता है. There's demand and there's supply. ठीक है, अगर आपके पास एक स्किल है जिसकी डिमांड है, upskill yourself towards that demand. You become a supplier to that demand. Where you fit in 100% exactly. Freelancing the skill which can be through Upwork, Fiverr, and yes, many other freelancer, places. Guru. Yeah. There are many places out there. So the 9th one would be. So we're going to talk about faceless videos. ठीक है, अगर आप confident नहीं है कि I can come on to YouTube, but आपके पास आपको खाना बनाना आता है, for example, कुछ नहीं चाहिए आपको, 2 हाथ चाहिए और आपको एक अच्छी रेसिपी चाहिए. You start making that recipe without showing your face and start uploading, because आज पाकिस्तान में आपको पता है लोग कैसे खुश होते हैं अच्छा खाना बना के. अगर अच्छा खाना देख कर भी, अच्छा खाना देख के भी और अच्छा खाना बना के भी. राइट. सो फेसलेस वीडियोस, इट्स टाइम आप यू ओपन अप टिकटॉक. सही है, आप देखें उसके अंदर लोग कोड शेयर कर रहे होते हैं, उसके अंदर लोग चीजें शेयर कर रहे होते हैं जिसके अंदर देयर इज नो फेस. सही, फेसलेस वीडियोस इज इन टुडे राइट नाउ. You can give training, tutorials, you can give manuals out there, and you can start building your own content channel without even having a face. Even on Faceless social media videos pages, even is if, very much in. even if you don't know the YouTube, I mean Instagram page, if somebody Yeah. creates a page or सिर्फ Instagram page, they start getting the followers 10,000, 20,000 and become this influencer page. Yes. Brands start approaching you. Brands start approaching and you start monetizing it very easily. Yeah. Right. And we now move to our next 10th. 10th. So this is my favorite one. What? And which is why I kept it for the last. What? That is dropshipping. Okay. Dropshipping is something जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता. सही है. So dropshipping is you build a partnership model with any of the service providers at the back end. There are a lot of dropshipping providers. जैसे for example AliExpress की भी अपनी एक dropshipping site है. All you need to do is make a site as a front end and bring traffic to there over there. Okay. ठीक है. आपका यूजर एक ऑर्डर प्लेस करेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके पार्टनर के पास जाएगा कि दिस इज द ऑर्डर इन दिस नेम, डिलीवर इट टू दिस एड्रेस. उसको ये नहीं पता कि आपने कितने का बेचा है. सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास, सो आई हैव दिस फ्रेंड, ही रन्स दिस बिजनेस इन कनाडा. सो ही रन्स दिस ड्रॉपशिपिंग बिजनेस जहाँ पे कोई भी चीज़ आप मंगाते हैं वो 4 to 8 days के अंदर डिलीवर हो जाती है. एंड इज इंटीग्रेटेड 7 to 8 ड्रॉपशिपिंग पार्टनर्स एट द बैक एंड. So, for example, if he's buying anything or anything that is priced at, now over here, also remember, you don't need any inventory for this. All the inventory will be provided by the dropshipping partner to you, right? So, अब एक product है, for example, जिसका $8 का एक product है, ठीक है, on his website. The price of that product would be somewhere around $2 at the back end. Now, आपका सवाल ये होगा कि ये तो सब कर सकते हैं, इतना बड़ा price gap क्यों है? Because you need to have that investment in place in order to bring that traffic. You do marketing. अब आपका अगला सवाल ये आएगा कि मार्केटिंग के कोलैटरल्स कहाँ से आएंगे? वो सब आपको ड्रॉपशिपिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है. अच्छा, okay. All of the content that you're going to use on Facebook as ads, as search ads or anything of that sort, वो सब आपको ड्रॉपशिपिंग पार्टनर प्रोवाइड करता है एट द बैक एंड. उसकी फोटोग्राफी, उसका कंटेंट और सारी चीजें. All you need to do is make a website, start populating that website with the products, have your right SEO and have your right audience. Bring them over there and make them purchase the products that are out there. Now, how does that differentiate between you and the person who's actually selling it on their website as well? You would be thinking this as well. एक ड्रॉप शिपिंग पार्टनर से आपकी साइट नहीं चलेगी. You need to do that research of integrating. So you need to run a monopolistic store. सही है. Where you have different items of multiple categories integrated into one place. Okay. So that drop shipping offering works for you. Okay. So for example, आप एक household है, ठीक है. Now you need multiple items. For example, आपको एक for example dog chain चाहिए, right? Now when you go online, dog chain एक अलग वेबसाइट बेच रही है and dog biscuit एक अलग वेबसाइट बेच रही है. सही है. You will have to order in 2 places. But if there is a person who's actually running a drop shipping website, you can order the dog chain and dog biscuit from the same site.
So you need to be smart enough the kind of the combinations that you're going to make. Yes. Right? Yes. And dropshipping is one of the best businesses and the side hustles that you can start with a very low investment, and it can scale like anything because there are a lot of sources and a lot of providers that are actually doing this business and they're surviving like anything all across the world. Very So, interesting. Thank you so much, Ghulam Jilani Kothari Saab, for being with us and for leveraging us with so much great information. I'm sure I'm going to do the round 2 with you on generative AI specifically. Sure. But for now, this was all. Thank you so much for watching. Please do subscribe. I will be coming with such amazing people within our country, and we'll be creating such content. Thank you so much. You're welcome.